You're watching SGT Times with me, Arshnoor Kaur. Let's have a look at the top stories. SGT University launched Advanced Study Institute of Asia. SGT University invites representatives from the European Union and its member states to speak to its postgraduate students. Atal Community Innovation Centre, SGT University's startup project, secures the third position in Central India's largest bee plan, pitch their competition. Internal Quality Assurance Cell, in collaboration with the CEAPS, SGT University organizes the second session on outcome-based education. Now the news in detail. During the event, the Vice Chancellor said the university has been working on constructing a research institution that would expand its understanding of Asia in all of the key elements that such a big continent deserves. Today, the university unveiled the research institution in the august presence of the board, which included the university's Chancellor Shri Ram Bahadur Rai, as well as the renowned guest Professor Dinesh Singh and other prominent members of the university. Let's have a look. The institute was headed by Sri Najeeb H. Jung, a knowledgeable expert in energy and Urdu, Sri Indu Bhushan, a former bureaucrat who played a key role in setting up Ayushman Bharat as its first CEO, and a public health professional, was appointed as the vice chairman. Sri Rajat Nag, a former MD of the Asian Development Bank with an unparalleled understanding of various issues and challenges related to Asia, was also part of the board. Ms. Sandhya Vasudevan, a former MD and CEO of Deutsche Bank, who has been working on fintech and innovation across India, was also included on the board. The institute was inaugurated by Padma Shri Ram Bahadur Rai, Chancellor of SGT University. Najeeb Jung, in his speech at the inauguration event, said that this is a big achievement of SGT University, that Asia will be a part of their university, lending an excellent opportunity to its students to be a part of this eminent scientific research institute. He added that the world is a sea of knowledge, and with Asia, students will get the opportunity to explore and learn more about it. Padma Shri Ram Bahadur Rai said that SGT University wishes that Asia Day should also be celebrated on the 6th of August. काफी पहले एक प्यारेलाल हुए हैं जो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी होते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के आखिरी दिनों पर 4 किताबें लिखी हैं। जो चौथी किताब है, किताब का शीर्षक है पूर्णाहुति, खंड 1, 2, 3, 4। आप पूर्णाहुति के चौथे खंड को देखेंगे तो उसमें एक जगह इस बात का उल्लेख आता है कि गांधी जी ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। जब ये एशिया के इनॉग्रेशन की बात आई तो मुझे ख्याल में आया कि मैंने ये पढ़ा है कहीं पर, तो फिर मैंने गूगल बाबा की मदद ली और उनकी मदद से काफ़ी कुछ नेट पर है। मैंने ये जाना कि 23 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, आप जोड़ लीजिए कितने दिन हुए, 1947 में एक कॉन्फ्रेंस पुराना किले के अंदर हुई थी और उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके होस्ट भी थे और उसमें ही ये बात लिखी हुई है, यानी गूगल बाबा के साहित्य में, कि कभी 1945 में, यानी 2 साल पहले, कॉन्फ्रेंस होने के 2 साल पहले, बी शिवा राव
अब बी शिवा राव के बारे में यहाँ आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। बी शिवा राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, हिंदू अखबार के यहाँ प्रतिनिधि थे और गांधी और नेहरू के करीब, ये तीन उनका परिचय है। तो उन्होंने एशियाई देशों को 1945 में घूमते हुए और उनके मन में ये आइडिया आया कि एक एशियाई कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सलाह दी, जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्वीकार किया और एक एशियाई रिलेशंस कॉन्फ्रेंस नाम का एक फोरम बना और उस फोरम के पहले अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन जब उनको वाइस प्रेसिडेंट का यानी वाइसराय के वाइस प्रेसिडेंट का जब ऑफर मिला और वो प्राइम मिनिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं उनको, तो फिर उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उन्होंने सौंपी सरोजिनी नायडू को। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की और उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर और तमाम बड़े बड़े लोग हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि परस्पर एशियाई देशों में आपस में सहयोग कैसे हो सकता है। अब हम कॉलोनियलिज्म से बाहर आ रहे हैं, देश स्वतंत्र हो रहे हैं, तो आपस में स्वतंत्र देशों का एशिया के स्वतंत्र देशों का कैसे आपस में और किन बातों में सहयोग हो सकता है। लेकिन उसमें उस कॉन्फ्रेंस में भी और कॉन्फ्रेंस के बाहर भी जो सवाल तब थे वो सवाल एशिया पर जब आप अध्ययन करेंगे तो आज भी है। और वो क्या था कि क्या भारत एशियाई देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल उस समय भी था और इसलिए कुछ एशियाई देश उस आशंकित भी थे। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति या भारत सरकार की जो थी उस समय, उसके सामने भी एक सवाल था कि हम ये जो कर रहे हैं उससे कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, कहीं रूस नाराज ना हो जाए, कहीं यूरोप नाराज ना हो जाए। और आज जब एशिया पर आप कोई अध्ययन करेंगे तो ये सवाल भी आज भी बना हुआ है। अब कुछ नए सवाल भी आ गए हैं। महात्मा गांधी उन दिनों दंगे हो रहे थे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास और सारे देश में, तो उन दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू के आग्रह पर आखिरी दिन वे आए उस कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। अब ये उस कॉन्फ्रेंस को यूरोप नाराज ना हो जाए, अमेरिका नाराज ना हो जाए, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी चतुराई से उसके कल्चरल एस्पेक्ट पर फोकस रखा। और मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल एस्पेक्ट पर फोकस करना जो एशिया अभी इंस्टीट्यूट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं उसका भी होना चाहिए। अब पता नहीं ये नजीब जंग साहब को याद है या नहीं, संभवतः इन्हीं की कोशिश रही होगी, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन शीला दीक्षित जब यहाँ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक एशियाई कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है, होटल ताज में, और मैं उस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। हमने कुछ सवाल भी पूछे और जो सवाल में पूछता था तो शीला दीक्षित डिसाइड कर रही थी और कुछ लोगों ने रोकना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप रोकिए मत, राम बहादुर राय जो सवाल पूछ रहे हैं वो जायज सवाल है।
तो इस तरह से एशियाई रिलेशंस पर या एशिया पर अध्ययन करने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक इस कोशिश में निरंतरता है। इसमें नई बात इतनी ही है जो प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने कही कि इससे पहले जो कोशिशें हुई हैं वो सरकारी स्तर पर हुई हैं, सरकारों की ओर से हुई है या किसी व्यक्ति की ओर से हुई है या किसी छोटे राज्य की ओर से हुई है। ये पहली बार एक विश्वविद्यालय ने इसकी कल्पना की है, ये इसकी नवीनता। और इस दृष्टि से मैं इसको कहूंगा कि पहला प्रयास है और सराहनीय प्रयास है। और ये जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जिस पहले कॉन्फ्रेंस की मैंने चर्चा की, वो उसमें पार्टनर था। और आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स बहुत दिल्ली के एक तरह से कहा जाए, जहाँ दिल है दिल्ली का, वहाँ उसका स्थान है, लेकिन आज वो खंडहर हो गया है। जब मैं दिल्ली आया था तो 3 पुस्तकालयों में मैं अपना समय बिताता था। उसमें एक इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का, जो 12 खंबा रोड पर जिसकी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। आज कोई अगर वहाँ जाकर देखे तो अब लाइब्रेरी का तो पता ही नहीं है। और जो पुराने अखबार वहाँ के थे, उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये कोई बताने वाला नहीं। हालांकि वो विदेश मंत्रालय की एक संस्था है। अब आज जब हम एशिया के बारे में बात करते हैं तो जैसा मुझसे पहले सब लोगों ने कहा है और अच्छी बातें आई हैं सामने, मेरी समझ से उन बातों के अलावा मेरी समझ से सबसे पहले जो अध्ययन का विषय है जिस पर काम किया जाना चाहिए वह है डीकॉलोनाइजेशन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जितना जिस स्पीड से, जिस गति से, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एक आदमी का दिमाग हो, चाहे सोसाइटी हो, जिस गति से आप डीकॉलोनाइजेशन करेंगे उसी गति से आप अपने को पहचान सकेंगे। हम अभी चारों तरफ के दबाव में हैं और इसलिए डीकॉलोनाइजेशन जैसे जैसे होगा तो मैं कह सकता हूं कि एशियाई जीवन, लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, परिवार पूरी एशिया में, यूरोप में है या नहीं, अमेरिका में है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एशिया में चाहे वो जो भी देश है उसके जीवन जीने का ढंग क्या है, उसके एक दूसरे को जोड़े रखने वाला सब एलिमेंट क्या है, वो परिवार है। समाज कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, परस्परता कैसे है, यानी हम एक दूसरे से कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, और उसी तरह से हमारे जीवन शैली के सेंटर में कैसे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। और पर्यावरण जैसे मान लीजिए भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है। अब भारत सरकार में मतलब कोई भी बुद्धिमान आदमी अगर होता तो पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके और उसको पंच महाभूत मंत्रालय बना। पर्यावरण पश्चिम की कल्पना है और पंच महाभूत भारत की कल्पना है।
एशिया की कल्पना है। और पंच महाभूत में अगर समन्वय होता है तो पर्यावरण बनता है। लेकिन अभी शायद भारत सरकार को इसकी फुर्सत नहीं है, तो वो अपना नाम भी ठीक से बदल नहीं सकते। उसी तरह से कम्युनिटी मॉडल क्या है, क्या रहा है और भविष्य में कैसा हो सकता है, ये भी उसी तरह अध्ययन का विषय है। जैसा मेरा ख्याल है प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने कहा, यूक्रेन युद्ध का मेरा ख्याल उल्लेख आपने किया। यूक्रेन युद्ध के दो एस्पेक्ट हैं कम से कम। एक तो यह है कि यूरोप युद्ध में पहली बार फंसा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जहां पूरा का पूरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया उपेक्षित रहा है या एशिया का शोषण हुआ है, वहीं पहली बार यूरोप युद्ध में फंसा है। और मैं कल जो लोग यूरोप के यूक्रेन के युद्ध को ठीक से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मैं कल बात कर रहा था और मुझे जो जानकारी मिली उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये युद्ध रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और इसमें बेलारूस भी शामिल होगा, हंगरी भी शामिल होगा, और इसके बाद उसका क्या स्वरूप होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये युद्ध यूरोप के अस्तित्व का युद्ध है। मैं एक जगह युद्ध हो रहा हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एशिया का ये अवसर का युद्ध भी है, लेकिन ये एक हकीकत है, उस हकीकत को हमको स्वीकार करना चाहिए। क्या इस युद्ध में एशिया की भी कोई भूमिका हो सकती है? और आज जब एशिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत और चीन ही केवल एशिया नहीं है। जब शीला दीक्षित ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उस समय मैंने नंबरिंग करने की कोशिश की थी और मुझे याद है कि 45 के करीब देश हैं जो एशियाई देश हैं। जहां तक मुझे याद है करीब 1/3 दुनिया का 1/3 हिस्सा एशिया है और दुनिया की 60% आबादी एशिया में रहती है। ये आबादी हमारी ताकत हो सकती है, इसका भूगोल हमारी ताकत हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत यह है कि कोई बताए हनुमान को कि आप समुद्र लांघ सकते हैं। ये कौन बताएगा? हो सकता है ये जो अभी एशियाई अध्ययन के लिए नामकरण जो हुआ है वो भी एशिया है, तो हो सकता है एशिया बताए। और मैं चाहता हूं कि एशिया बताने का एक संकल्प करें। अब एशियाई एकता के प्रयास पहले भी हुए हैं, विचार के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, शोध के आधार पर और सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पर रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे जा सकते हैं। जो कुछ पहले काम हुए हैं, इस एशिया की पहली जरूरत है कि उन कामों का एक लेखा जोखा या आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि अब तक क्या इस क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं। दूसरा, नया काम क्या किया जा सकता है जिसके बारे में आप सबने सुझाव दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे संघाई, मेरा ख्याल है इंदुभूषण जी जिस कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं वो शायद संघाई सहयोग संवाद की कॉन्फ्रेंस रही होगी, क्योंकि वो भी चल रही है दिल्ली में, 20 देश उसमें आए हुए हैं। जो भी हो, लेकिन
मैं दो एक बातें और कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। नंबर एक यह कि क्यों नहीं ये संस्थान एक एशिया दिवस की कल्पना करें। अब आप सोचिए एक एशिया दिवस क्या हो सकता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा 6 अगस्त एशिया दिवस हो सकता है। 6 अगस्त का एक महत्व है। 6 अगस्त 1945 वह दिन है जब हिरोशिमा पर बम फेंका गया। और इसलिए अगर मुझसे कोई कहे तो मैं कहूँगा कि एशिया दिवस 6 अगस्त को मनाया जाना चाहिए। अभी तक किसी ने शुरुआत नहीं की है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें करना चाहिए। और उसे मैं काला दिन मानता हूँ, उसे मैं त्रासदी का दिन मानता हूँ। तो इस संस्थान में कुछ नए काम हो, अच्छे काम हो, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। इसका आइडिया हमें पैदा हुआ करीब 7-8 महीने पहले और उसका श्रेय हमारे दोस्त दिनेश सिंह को जाता है कि जब ये क्लिक शुरू कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि कुछ इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और यहाँ से लौटते हुए फिर जब मेरे साथी अमोक राय हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो ये अंदाज हुआ कि आपकी साइंस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है तो इसमें ज़रूरी है कि कुछ लैटरल इनोवेशन किया जाए, कुछ नई सोच पैदा की जाए। क्योंकि फैकल्टीज़ में भी, स्टूडेंट्स छोड़ दीजिए, फैकल्टीज़ में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं। और आज यही बात हो रही थी जब हम बैठे थे कि ये आवश्यक है कि हम लोग सब थोड़ा सा सोशल साइंसेस की तरफ भी ध्यान दें। और ये बहुत मुमकिन होता है कि एक साइंस ओरिएंटेड शख्स हिस्ट्री भी पढ़ना चाहे, कुछ रिसर्च करना चाहे, क्लाइमेट पे रिसर्च करना चाहे, एनवायरनमेंट पे रिसर्च करना चाहे, नदी नालियों पे रिसर्च करना चाहे, इतिहास पे, पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है, इसमें एक छोटी सी ये कमी है, एक ऐसा रिसर्च सेंटर जिसके साथ जोड़ा जाए जहाँ सब लोग सोशल साइंसेस पे काम कर सकें और उन चीज़ों पे काम कर सकें जो जिसकी नॉलेज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी को सोच के हमने इस पे एक 8-10 महीने पहले काम करना शुरू किया था। और सबसे खुशी की बात यह है कि मनमोहन सिंह साहब ने एक 10 मिनट भी हेजिटेट नहीं किया इस आइडिया को इनकरेज करने में। तो यह आपकी फिराफिरी है कि एक शानदार बिल्डिंग हमको दी गई और जिन लोगों ने हमारे साथ काम करने के लिए रजामंदी की है तो वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत नामी गिरामी है। जैसे अमोक मानस साहब ने जिक्र किया, रजत नाग साहब पहले जैसे रजत नाग साहब हैं, इनके लिए ये पहले शख्स हैं जिनके लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाई और पहले हिंदुस्तानी है जिनके लिए पोस्ट बनी। तो ये हिंदुस्तान के लिए भी गर्व की बात थी और इनका तजुर्बा पूरे एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया के लिए है। उसी तरह इंदुभूषण साहब को हम लोगों ने निवेदन किया कि हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि जो काम इन्होंने हेल्थ सेक्टर में किया है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वो काफ़ी नामी गिरामी है और इनको प्राइम मिनिस्टर ने मदऊ किया हिंदुस्तान के आप आइए और आयुष्मान भारत के पहले CEO बने। इसका एक इंस्पिरेशन और है जो मैं बता दूं, वो है मेरे दोस्त अमोक मानस, जो खुद मेरी नज़र में काफ़ी एक इंस्पिरेशनल नौजवान है। इनकी वित्त समझ की, पढ़ाई की, मैं नहीं समझता कि इस उम्र में बहुत लोग होते हैं जो इतनी डीप सोच और इतनी विशाल सोच रखते हैं। तो संध्या के बारे में आप सुन चुके हैं, तो ये टीम हमने इकट्ठी की है इसी इरादे से कि एशिया के मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में हम लोग रिसर्च कर सकें, एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च कर सकें। और आप ये देखेंगे, मैंने देखा है कई यूनिवर्सिटीज़ में कि अलग अलग सेंटर एक स्पेशलिस्ट सेंटर बन जाते हैं। मेरा जामिया का तजुर्बा अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है, सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज़ है, सेंटर फॉर सिख स्टडीज़ है वगैरह। हम ये आपको एक कंसोलिडेटेड सेंटर पेश करना चाहते हैं जहाँ जिस मौजू पे, जिस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करना चाहें वो आपके लिए हम सुविधा दे सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये एक नायाब सेंटर होगा हिंदुस्तान में जिसमें तरह तरह की मुख्तलिफ रिसर्च होगी और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होगा। इसीलिए हम लोग फिर से एहसानमंद हैं मनमोहन सिंह साहब के कि आपने 5 मिनट भी नहीं सोचा हमें इजाज़त देने के लिए, एक ऐसी चीज़ शुरू करने के लिए जो पहले कभी तजुर्बा हुआ नहीं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कहीं भी आप जाएं तो एक इतना कंसोलिडेटेड सेंटर आपको नहीं मिलेगा। राय साहब, आपका इंस्पिरेशन हमारे साथ है, थैंक यू, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और आप लोग सब, आपकी सबकी मदद लगेगी, आपका सबका इंकरेजमेंट लगेगा आने वाले महीनों में। शुक्रिया। The chair of the institute is Sri Rajiv Chand, a man with a formidable reputation. You know him as the former leader in government of Delhi. But much before that, he's been a bureaucrat, a vice chancellor of a leading university. He has been an academician of energy at Oxford. He has worked in Afghanistan when the Taliban were defeated, but they were still in the country. He has a wealth of experience on Asia, having worked with the Asian Development Bank for a very long period of time. He is the chair, welcome sir. The vice chairman of Asia is Sri Indubhushan. You know him as a bureaucrat who started the world's largest health insurance scheme, the Ayushman Bharat. He was its first CEO. He has been a bureaucrat. He has been with the World Bank. He has been with the Asian Development Bank. He's a health economist, a PhD from Johns Hopkins, with an undergraduate and master's from IIT, PHU and IIT Delhi. He has been an academician. Currently, he's the chair of Partnership for Impact. He's going to be the vice chairman, having had a very long association with healthcare concerns on equity, accountability in the Asian continent. I welcome you, sir. The member of the board of Asia, Sri Rajat Lal, is an expert on Central Asia. Currently, he works with the Centennial Group. He has been a managing director. I think one of the only people for whom a position of managing director was created in the Asian Development Bank. He is an economist.
having studied for his undergraduate at IIT and then studied in Canada and the London School of Economics. He is a technologist who looks and works on managerial issues. He has a huge exposure on problems associated and related with the Asian continent. I welcome you, sir. Today's distinguished guest is Professor Dinesh Singh. Professor Dinesh Singh was crowned with the epithet of the Rock Star Vice Chancellor of University of Delhi, where he was the 21st Vice Chancellor of the university. He is a distinguished professor. I'm very happy to relate to everybody knows it, at SGT University. He has also been appointed since October 2022 as the Vice Chairman of the Higher Education Commission in Jammu and Kashmir, where he is working on trying to do some creative experiments on education. He is a distinguished guest today, but I also hope that he becomes a distinguished professor and a visitor to the center. I welcome you, sir. Miss Sandhya Vasudevan. Sandhya has been one of the most interesting people that I have met while I was trying to kind of talk to a lot of illustrious people to start Asia. Managing director, former managing director of Deutsche Bank. A lot of things that she does, but one thing that she does very well is she tries to connect the dots. You know, a lot of experiments that are happening, so she gets people together, and she's interested and excited about the prospect of India in the Asian continent. How do we make it work? How do we escalate it? How do we leave? How do we turn our soft power into something that is hard and concrete and long-lasting? I welcome this. With this, we also have a distinguished fellow, he who could not make it today, Shri Manpreet Singh Badal, former Finance Minister of Punjab. He will also be working with us, but I think I'm going to leave it to the chair to introduce it. And we are doing this in the presence of our Chancellor, who needs no introduction. So with this, I think I'm done. Thank you very much. It is indeed my pleasure and privilege to be here on, I consider it a historic moment when a new institution is being launched, and this is an institution which has the potential to add and play a very important role in the region, and I'm hoping also shaping the future of this region. We live in a very dynamic and most vibrant part of the world. This is a region with a lot of progress has been made. It has a very rich history, great diversity, and a lot of things have happened, and the whole world looks to Asia for lessons. But within Asia, we can't say that we have overcome all the challenges. We have huge amount of challenges. Challenges of diversity, political problems, security problems, and other problems. And indeed, we can learn from each other. There is a need for collating the lessons. There is a need for greater integration and cooperation. And I hope and I'm sure that this organization that we are setting up is going to help in addressing those challenges and helping countries grow together and have an even better future than what we have. When I first encountered the possibility of Asia, I was talking to Amoji, and there were a number of new ideas that were cropping up. And I've shared 3 of them. I'm not sure which ones we'll explore, but to me it's an exploration. One was around India needs to be a leader in the field of quantum sciences. Not necessarily quantum computing, but pure sciences. We have the brains, we have a cultural history where the thought processes of quantum mechanics are very easy for us as a culture to absorb. What do we need to build that concept? Today, a lot of focus is around quantum computing. That's a step on that journey. Another idea which cropped up just recently was with the fisheries. I was working with an NGO. If you do the GI tagging,
That particular NGO worked in Bundelkhand during drought, where there was ponds and fishes, so that the families around that area still had food. And that's a methodology that has been there for 600-700 years. Same thing in Bihar, a similar story from Meghalaya. And the conversation that we had is, can we explore that possibility for food security and potentially as climate change happens, are there learnings or possibilities from that? So the GI tagging exercise can kind of explore opportunities. I got a call from Najib a few months back. I was traveling. As usual, Najib comes straight to the point and he said, "Ek center ban raha hai, join karoge?" And I said, well, since you asked, the answer is yes. But then I thought I should ask another question. You can't just say yes and don't know what it is. So I said, terms of reference kya hai? And he said, there is no terms of reference. So I said, double yes. So that for me is really the biggest attraction. And I'm very grateful to Sriram Bhadurraji and all of you and Nadan for having that vision to create a center without any terms of reference. That, I think, defines a knowledge institution. As Najib said very rightly, there are many centers, and those are excellent, world-class centers of specifics, and those are very needed. But I think we also need a center where we don't define anything to begin with. We just know there is a destination. And for me, as Hindu has said and Najib has said, for me, it has always been Asia, of which India, China, all the other countries are very important parts. And we're all very proud of the achievements of Asia. I mean, in the last 50 years, Asians are much richer, much more educated, much healthier, live longer. And therefore, there has been a certain amount of euphoria till the Asian century is here. And Indu and Najib and I have been part of a team which has said, yes, but. So the Asian century, which became a slogan, is just that, it's a slogan. It's plausible, but not preordained. And there are challenges, and Indu referred to some of them. And what I am looking forward very much is, together with all of you, to look at those challenges and what to do about it. And yes, I hope very much, Amok, that our good friend Professor Singh will not only be a distinguished guest today, but will be a partner, because the challenge is to climb those hills, and there are several hills. It's all very easy for all of us to get into a room and say, we made it. But the fact is, we have not. We have achieved a lot of challenges, equality, inequality rather, deprivations, huge deprivations in Asia. South Asia has a maternal mortality rate which is still 8 times that of Europe. Now in that, as Indu said, there are obvious differences. And I think we all, collectively, particularly the younger ones, will have to think of what we need to do to make that Asian century a reality. I believe it is possible, but it is not preordained. So that will be my focus, and I hope very much that the atmosphere that you have created in this university of inquiry, of questioning, not taking something for granted and extrapolate the past into the future, will be very, very exciting. And I look forward very much to be a part of that process. We'll see where it goes. But I'm delighted to join my colleagues, Najib and Hindu and others, to be part of this team without a terms of reference. जब यह कार्यक्रम आरंभ हुआ और मैंने देखा कि मंच पर जो अलग-अलग दृष्टिकोण से एक दिशा पकड़ के आगे बढ़ चुकी हैं अपने जीवन में, तो मुझे ऋग्वेद की आरंभ की पंक्तियां याद आई। अनो भद्रा पितवो या तु विश्वतः, let noble thoughts come to us from every direction. मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एशिया
इसी आधार पे बना है, यही उसके मौलिक सिद्धांत है। और सबसे संतोष और हर्ष की बात है कि एशिया स्थित है एक विश्वविद्यालय के अंदर। इससे तमाम प्रकार से लाभ होगा। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे जो छात्र, उसको अवसर मिले एशिया से जुड़ने का, और हम कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बनाए। चांसलर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि एशिया के साथ जब हमारा छात्र जुड़ेगा, कुछ नई युक्तियां ले आएगा, कुछ सोच ले आएगा, कुछ दृष्टिकोण बनेंगे, तो अपने अपने विषय में, चाहे किसी भी विषय से वो आ रहा हो, उसको कुछ क्रेडिट प्रदान की जाए अपने डिग्री की ओर। विश्वविद्यालय की परिभाषा यही है कि हर प्रकार से इस विश्व को, इस संसार को हम एक ज्ञान का सागर माने, हर अनुभव से हम अपने को लाभदायक बनाए, हम हर अनुभव से सशक्त हों और अपनी डिग्री में इस बात को दर्शाएं। और अगर एसजीटी इसमें सक्षम हो गया तो मैं मानता हूं कि भारत में यह पहल होगी, और कहीं मुझे ऐसा दिखता नहीं है। Privileged to be part of this extraordinary event of inauguration of the advanced study of Asia. I owe my gratitude to the Almighty God and Shri Guru Gobind Singh Ji for bestowing their blessings on us. I would like to express my sincere thanks to our Honorable Chancellor, Padam Shri Ram Bahadur Rai Ji, whose blessings and inspiring words keep us going for the continued betterment of our university. I extend my gratitude to Shri Nasib Jan Sahib Ji, former Lieutenant Governor of Delhi, a renowned academician, for conceptualizing Asia and accepting the request to chair it. My special gratitude to the respected Managing Trustee Shri Manmohan Singh Chawla Ji and Chairperson Madam Mrs. Madhupreet Kaur Chawla Ji for providing a nice platform to organize such an academic activity. I am very grateful to our distinguished guest, Professor Ganesh Singh Ji, a well-known academician and former Vice Chancellor of University of Delhi, for gracing the occasion. I sincerely thank Shri Indu Bhushan Ji, who helped setting up Ayushman Bharat, the biggest health insurance of the world, Ayushman CEO, for his enlightening words and sparing time from his busy schedule to be with us at this occasion. I express my gratitude to Shri Rajat Nagji, former MD, Asian Development Bank, having great insight on issues and challenges in Asia and inspiring us with his words of wisdom. My special thanks to Ms. Sandhya Vasudevan Ji, former MD and CEO, Youth Bank, for sparing time to grace the occasion. Bureau Report, SGT Times. SGT University has invited representatives from the European Union and its member states to speak to its postgraduate students as a part of its European Research and Higher Education Day, to give them the chance to comprehend the ecosystem for international research and outward mobility. Let's have a look. A constellation of influential figures from the fields of research and education attended the event. Mr. Perik Phelan Ashida, EU Directorate General for Research and Innovation in Asian, gave an overview to the students about the values, aims and mission of the EU and the hope to foster long-term research ties between Europe and India. Horizon Europe is the EU's key funding program for research and innovation. While addressing global challenges, it combats climate change and aids in the implementation of EU policies. Education is a real opportunity for Europe because in Europe we need to team up with countries that have talents, but we must do it in a balanced way. So it means we are not there for brain drain, we are there for brain circulation.
in the sense that if we have talented European students and talented European professors, they should come and teach in India, and conversely, Indians should come to the EU countries. So EU is very interested in both research and education with India. You will hear from my colleagues who will animate the different roundtable from different countries, how we do it differently, but still we have a backbone in Europe. We are promoting education at the same time as we promote, like Dr. Rajne Watna was mentioning, we promote society. So we promote equality, we promote values, and this is what we have in common with India right now. And we will keep in touch. We would like, really, it's not a one-shot event. We would like, because that's why we brought member states, we would like to continue on the variety of tools we have, being at the EU level or being with EU countries. So thank you very much for the welcome, and all the best to the young students, young medical students especially, to whom I feel very close, and all the best to the academics here in the room. Thank you very much. Vivek V. Dham, Advisor for Research and Innovation at the Delegation of the European Union to India, goes into the delegation of government's program with Horizon Europe and the advantages that India-based researchers and innovators can take while applying here. So as Pierre already introduced what the Europe is offering and what we are doing together. So in quick time, I will give you what the EU is doing with India on research and innovation aspect. So this is what the presentation is all about. Right now there are 11 research and innovation calls which are open for collaborative research. So these are multilateral programs. So multilateral means, I will come to that point, you need more than 3 partners into a consortium. So these are big projects. So the 11 calls which right now open for the Indian participation is from the Horizon Europe program that the government of India has agreed to co-fund the successful Indian entities if you are part of the consortium. Then, representatives from France, Germany, Hungary, Switzerland, and Sweden shared information about the various doctoral programs and research opportunities available in their respective countries. Students learned about scholarships in Hungary, the STINCT program in Sweden, the Erasmus Mundus Joint Master Program, and much more. Bureau Report, SGT Times. Let's take a short break. We'll be back soon. SGT. Lets me question anything, even the university. I have visited other campuses too, but SGT has better infrastructure. Plus, it's hope. Here, we are not just students, we are emerging journalists. Here, we got an opportunity to interact with renowned media experts. Asia's biggest shooting floor, latest equipment, Practical learning. Faculties from the industry. Freedom of expression. Come, be a part of this revolution. SGT University, nurturing future leader. Welcome back after the break. A startup project of Atal Community Innovation Center, SGT University, Health Technology secured 3rd position in Central India's largest P-Plan Pitch Deck competition, E-Summit 2023. Let's have a look. This competition was organized by the E-Cell of Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, and was held from February 11 to February 13, 2023. The team comprised Dr. Sumit Singh Fukela, Mr. Rishi Sharma, and Mr. Akshat Sagar secured the 3rd position. It is a startup project onboarded with ACIC SGTU.
The team worked closely under the guidance of Dr. Omkar Shetty, Dr. Anil Gupta, Mr. Bakul Dev Rai, and Mr. Rajiv Gulati. It is a delightful moment as the team did well out of another top 40 shortlisted projects across the 400 projects from the country. All the dignitaries congratulated the team members. Bureau Report, SGT Times. Internal Quality Assurance Cell, in collaboration with the CEAPS at SGT University, organized the second session on outcome-based education on Friday. Let's have a look. Outcome-based education, or the OBE system, is being widely used by leading institutions worldwide. A teaching approach in which all aspects of instructions are based on a set of objectives. By putting more emphasis on skill and knowledge than grades, it bridges the gap between industry demands and the curriculum. It is widely propagated by the UGC and accreditation agencies like NAAC and NBA. To appraise the faculty about the process and its full implementation, Internal Quality Assurance Cell, in collaboration with the CEAPS CEEPS at SGT University, organized the second session on outcome-based education. Professor Pritam Singh Grover, ex-dean of Delhi University, was kind enough to serve as a chief guest for our workshop, where we focused on the mapping of program and course outcomes and the methods to assess them. SGT University hopes to adopt OBE and other modern learning methods to optimize student outcomes and learning. Staying on top of what the present demands are necessary for any institution, and this workshop was a great step in that direction. Bureau Report, SGT Times. That's all for today in SGT Times. Thanks for watching.